तो कैसे हैं आप लोग? Is that a good imitation? That's pretty good. Okay, CARRYMINATI's got a video here called Ladka. How do you say it? How do you say it? Ladka, Ladki. Ladka. Okay, it's the R sound. Yeah. The fake R sound. Ladka, Ladki, our. Whoa. Okay, what is Ladka? That's boy. What is Ladki? Girl. What is our? I don't know. And? Whoa. I don't know what woe is. I got a funny feeling. I got a funny feeling. Yeah. This came out right before pandemic. It's called, so boy, girl, and whoa. Whoa! So thank you to Tanmay Agarwal. No. Thank you to Humorous Love. Yes. For the subtitles. I knew I'd get there eventually. Just keep saying names. Rashi Mudalkar, somebody. Thank you, Humorous Love, for making the subtitles. And thank you, CARRYMINATI, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. Here we go. तो कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है. प्यार, धोखा, बकचोदी, ज्यादातर बकचोदी. लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं, वो है एक ट्रायंगल. लव ट्रायंगल. किसके बीच? एक लौंडा, एक लौंडिया और ई बॉम्बे. What the hell is that? आजकल के प्लेयर अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं. पहले सही होता था यार. एक बड़ा सा घर होता था जिसके अंदर परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है. भांजों के भी भांजे रह रहे हैं, मौसियों की भी मौसियां रह रही हैं, और अनगिनत पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, उनसे बड़े वाले पापा, सबसे बड़े वाले पापा और उनके भी पापा, जिनसे सबकी गांठ फटती है. पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था. लेकिन अब इस नए दौर में बहुत छिपकली का रूप लेके सास की गर्दन पे चिपकियो कुछ भरोसा नहीं है. फिर आज हम कुछ ऐसे ही जिंदगी पे सवाल उठाने वाले सीन देखने वाले हैं. तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के. कॉन्टेक्स्ट. हबकी और उसका परिवार रोजाना की बकचोदी से दूर चिड़ियाघर में आए हैं प्रोटेस्ट करने. लेकिन फिर अचानक थपकी आ जाती है. एक मिनट भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए आप लोग. But no one cares. फिर पुलिस आ जाती है और सब गान फटी में भाग जाते हैं. लेकिन चांडाल चाची अभी भी वही हैं. अब आगे. जब से बिहान ने उस गुड़िया को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है, तब से मैं सोच रही हूँ कि उससे बदला कैसे लूं. अब देखना, मैं तुम्हारी ही पत्नी को इस गोरिल्ला के हवाले करूंगी. What? इसकी मोटर कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है. जब मैं गोरिल्ला को देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं भैया, दूर रहो. लेकिन जब ये गोरिल्ला को देखती है, इसे दिखती है अपॉर्चुनिटी, मौका बदला लेने का. किस बात का बदला? किसी को लंड फर्क नहीं पड़ता. What the? अपने हाथ में ताला लेके पत्थर. Yeah, I know. Like... ओ चौथी फेल मैडम, ये कैसा सनसनी चूतिया पाए. नहीं, ऐसे टूटते ताले. तोड़ दिया बहन चोट, शाबाश. कौन सा चिड़िया घर है? दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा. मतलब जानवर जा रहा तो जाए मार चुका है. हम यहाँ बैठ के खाएंगे, हिलाएंगे और सो जाएंगे. वेरी गुड. अब थपकी को किसी भी तरह यहाँ लेकर आना है. हराम्बे. हमें तो पता नहीं. उससे बात कर सकती हो. मेरे साथ चलो, एक हिरण को अपनी स्टेटमेंट लिखवानी है. ये औरत बदला ले रही है या प्रैंक कर रही है? जो भी कर रही है मान नहीं रही है. गोरिल्ला के लिए फोन छोड़ दिया जिसपे घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर रखी है. उसको फॉलो करके गोरिल्ला इनके घर आ जाता है. What? The logic in this show is amazing. मैं तुझे ईयरफोन्स और स्पीकर्स दूंगा. ओए इधर. ये है मीबी के थंडरबीट ईयरफोन्स और मोनोटोन स्पीकर्स. दोनों की साउंड क्वालिटी एक नंबर है. गिटार से लेके हारमोनियम सब बढ़िया बजता है. बैटरी लाइफ भी ज्यादा है. इन्हें तुम जंगलों में लेके जाओ, पहाड़ों पे लेके जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर बेस इतना जबरदस्त, पूरी रात कूदता फांदता रहेगा. और एक बात मैं तुम सब लोगों को भी बताना चाहता हूं, मीबी अकेली ऐसी कंपनी है जो इस प्राइस पे इंटरनेशनल क्वालिटी देती है. चल तेरा हो गया काम. गो बर्तन मांजो. RIP earphone users. रुको. यार मामा, ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ. अबे तकिया फेंका है. खतरनाक गोरिल्ला. तोहफे फेंक रहा है, तकिए फेंक रहा है, बिस्तर खराब कर दिया. इतना रियलिस्टिक आतंक दिखाते कैसे हैं ये लोग? वैसे तो गोरिल्ला छाती पीट दे इंसान की, लेकिन यहाँ तो कहचुम कह चल रहा है. ये क्या कर?
pretty awful. Oh no! लग गई। तुमने कहीं जबरदस्ती कैच पकड़ ली। ये सही है, पहले खेलो और फिर जब लग जाए तो। Gorilla looks so scary. इसका मतलब ये मुझे चोट नहीं पहुंचाना। इसका मतलब तुझे पालतू रखना चाहता है वो। खुद से मतलब मत निकाल, गोरिल्ला है, फाड़ के निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगी। खैर इतनी देर में दोनों छोटी बड़ी भाभी गोरिल्ला को देख लेती है और उसके कान फाड़ देती हैं। फिर पूरा खानदान आ जाता है और गोरिल्ला को भगाने की नाकाम कोशिश करता है। गोरिल्ला है, कुत्ते का पिल्ला नहीं। वो भी बेचारा सोच रहा होगा मेरे को औकात ही नहीं छोड़ी, बहन चो कुत्ता बना दिया। लेकिन इस घर में सबसे चालाक है थपकी। वो अपने फोन में गोरिल्ला को खोल के कुछ ऐसा दे देती है जिसे देख के गोरिल्ला चौंधिया जाता है। दिल वाले कुछ देने Oh my! अगला एपिसोड। कॉन्टेक्स्ट। थपकी और उसका परिवार गोरिल्ला को चकमा देके भाग रहे होते हैं। अचानक फोन के सामने आ जाता है। फिर गोरिल्ला थपकी के पति को थपकी देके उसकी थपकी को बंदी बना लेता है और साइड में एस्थेटिक्स के लिए गैस भी लीक कर रही होती है। अब आगे ये क्या कर रहा है? कर नीचे कर। ध्यान, यहाँ से लोग आ गए हैं। बेहोश करने का इंजेक्शन है इनके पास। उसके लगते ही ये गोरिल्ला बेहोश हो जाएगा। ये हार्पिक की ड्रेस में 4 चूते गोरिल्ला बेहोश करेंगे। अच्छी लंट में मेरा प्लास्टिक की बंदूक से बैक्टीरिया मारने आए हैं। Uh-oh. ऐसा चंट चूतिया मैंचट पति देखा तुमने कभी? इससे पूछो अगर माँ बाप को रिश्ते के लिए मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? सॉफ्टी। माँ और बाबूजी को सॉफ्टी खिलाएंगे। बेटा दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तुम सॉफ्टी खाते रह जाओगे। Uh-oh. Oh my God, her सारे face. घर वालों के रिएक्शन एक ही बारी में नाप दिए और भाभी जी के तो 50 रुपए काटो। क्या सीन है? अलग ही फैशन है इनका। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज पे यही रिएक्शन होता है। कल मैं चाय बना रहा था और दूध फट गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1। अब घर की सबसे चालाक सदस्य थपकी एक प्लान बनाती है। आप अपनी बंदूक नीचे रख दीजिए। Oh. इतनी उम्मीदें थी गोरिल्ला से, भैंचो नकलची बंदर बना दिया। अभी डमरू बजा नाच के और दिखाएगा। अब चलो यार, बस क्लाइमैक्स की तरफ चलो, और नहीं झेला जा रहा है। थपकी की चतुराई। She's gonna take the gorilla tranquilizer. She's gonna die. वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। साले इन शो बनाने वालों को कोई गोली खिलाओ, क्योंकि ये लोग हकते जा रहे, कोई सीमा ही नहीं है। और ये साला गोरिल्ला है कौन? मैं पिछले 10 साल से फिजिकल थिएटर में हूँ और क्लाउन थिएटर में हूँ और उसी की वजह से मैं आज ये सब बहुत ही बहुत इजीली कर पा रहा हूँ ये सारी चीजें। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ये शो चलते रहेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ करने को है नहीं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 1.7 मिलियन लाइक्स के लिए। अगर नहीं हुए ना तो गांड में गोली मार दूंगा। और मीवी की सेल चल रही है उनके टॉप 20 प्रोडक्ट्स पर। मेरा पर्सनल फेवरेट है मूनस्टोन, क्योंकि उसे कहीं पर भी ले जाओ कोई सीन ही नहीं होता। It's got 2.2 million likes. It was pretty close actually, because like before you would ask for like 100,000 and you'd get like 5 million likes. Yeah. थपकी दे दो। खैर मेरी तरफ से सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद। नया साल आएगा, नई बकचोदी लाएगा। बाय। मोहित, कोयले लगा दे, हाथ सेकने हैं। Wow. Jesus
Christ, that's a show? You've never seen anything like this, have you? Because for me, growing up in Thailand, our soap operas are very similar to that. Like the reaction shots, that's literally what happens. Something happens, like someone gets a slap, and then everyone's all like, No, I've seen that. I mean, because like I said, always comes back to ex-girlfriends. I used to date an Afghani Chinese girl, and her Afghani family would watch Indian television, and I sat there in her Afghani sister's home watching Indian television, and it was like that level of melodrama with the reactions and the I'm like, what the heck is this? That's not the part that wigs me out. It's the gorilla and the integration of the gorilla into the show and the logic of getting the gorilla into the house, like leaving the phone behind, and like the gorilla gets Google Maps and like understands where to go. He called it out. He's like, what's this brilliant gorilla doing inside of a zoo? Yeah. Like it's that smart. He's so smart. Yeah. He's stuck in a zoo. Like what? And then she takes the tranquilizer. It's like she's got that sleeve. She didn't even need to put it into her skin. She could have just put it into the cloth, and the gorilla would have done the same. I'm assuming it's like it doesn't. The intelligence of the gorilla is very like weird because like it's stupid but smart at the same time. Yeah. The face of the eyes, it just looks so bad. Yeah. It looks really, really bad. I can kind of understand the over-dramatized reaction shots of everyone with the sound effects and whatever. Like, okay, fine, I can forgive that. It's the monkey, the gorilla, that's just like, you just went to this whole other level of what? You know what I'm saying? I'm just so bewildered. I know, and it's just so obviously a guy in a suit, right? Well, that's what I'm saying. It's so bad. I know, but like, bless him. I think he did a really good job of, trying to personify this gorilla. And he's so proud of himself with his years of physical theater training and clown training. No, but like those things are legit. I trained in that stuff too, and that stuff is full on. It's legit. So good for him that he's able to use those skills and make a living playing this soap opera gorilla in India. It seemed like your favorite part was when Carrie did the ad and he had the little Carrie beside himself. I love that. Carrie Dobby. The little Carrie. I love it just because his facial expressions and stuff were really funny to me. The whole thing where the girl's in her bed, the gorilla shows up and then starts tearing the bed apart and throwing stuff at her. The pillow and the backpack was just next level awful. He throws the pillow and she's like, oh, it's almost like whoever tossed this pillow was so lazy, she had to compensate. Do you know what I mean? Like, yeah, her reaction was not appropriate for a pillow flying at her. She literally could have just looked down. But like, what are you doing? Yeah, because the pillow came at her and it's almost like she went into it. And same with the backpack, she went into it and it's like, oh my God, my wrist. It's like, but you could have just stepped back. Like, it didn't have a whole lot of momentum behind it. Yeah. And so it's just a little bit surprising to me that whoever was tossing it, which was obviously not the gorilla actor, wasn't shoving it, like throwing it at her with more, it's a pillow. And the acting was just, Hey, you know what though? I feel like the girl who was playing Ladki, she wasn't actually that bad. Some of the acting, I mean, yeah, it's melodramatic and all, but some of it was really, really over the top. And some of it, I could just feel like, okay, I feel like they might be some good actors in here, but this is just the style. Am I being too forgiving? Yes, less bad is still bad. What happened with the tranquilizer darts? And look how awful it looks. Look how awful that tranquilizer, it looks like sad cigarette. Oh, I was thinking of a sad something else, to be honest. Well, your mind is dirty. It just looks like a cigarette that got wet, you know? Yeah. I don't know who you've been spending time with. That has nothing to do with anyone I'm spending time with. I'm just I don't know what videos you've been watching lately in your free spare time. That just looks sad. That's like a sad representation of something. Yes, of a cigarette. Of a cigarette. Yeah. Get off RedTube. Lund. Be productive with your time, Achara. Jesus. I hear you in the next room. What? So, anyway. That just got real weird. But it got real weird. Real weird. They took the darts out of the gun as if that would matter. That's a crucial story point, okay? Because she has to pick it up. Oh, right. Yeah. Duh. Come on now. They write these scripts. They're so amazing. These stories, these serials are ongoing. People watch them every day. They work so hard and they have such a fast turnaround. I wonder how the actors feel going chip, 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 chip when they were all like beckoning at the gorilla in the cage. Yeah. They sound like mine from Finding Nemo. The seagulls. The seagulls, yeah. But anyway, that was
Interesting. That was interesting. That was an insight into the world of Indian soap operas. It's very extra. Are they all that level of weird with the gorilla? What do you mean? The gorilla thing just threw me off. Like everything I've been exposed to just had human beings in it. There was no animal, what do you call that? Bestiality. There was no bestiality involved in any of the things that I had watched. Hey, you gotta take it to the next level. When relationships between people aren't enough anymore, throw an animal into the mix. When it gets stale, add your dog. Throw in a gorilla. Throw in a gorilla. Because that won't just rip someone in half. Yep. All right, you guys. Thanks so much for hanging out with us. Thank you, CARRYMINATI, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. Thank you, Humorous Lav, for doing the subtitles and doing a fantastic job with the subtitles and adding your spin to it. And you guys, make sure to follow Achara KIRK on the social media, as well as the jabs. If you feel like doing that, if I can get these words out, we'll be all right. Yep. Twitter, Instagram, subscribe, check out our other reactions, reviews, short films, vlogs, and interviews. I'm Jaby Koay. This is Achara KIRK. Peace out.